Hi, ladies and gentlemen. This is Mahwash Ajaz. You're watching me on YouTube, and as always, you're listening to me on Spotify. And as always, मेरे साथ ड्रामा गप के लिए मौजूद हैं सदफ हैदर। सदफ, अस्सलाम वालेकुम। Walaikum salam. Good to be with you, Mavish. सदफ, हमने एक ये इम्प्रॉम्प्टू सेशन प्लान किया है और हमने सोचा है कि क्योंकि देयर इज अ लॉट टू डिस्कस इन जफ्फा एंड कभी मैं कभी तुम, तो बाकी ड्रामों को फेयर नहीं है कि उनको उनकी स्पेस नहीं मिलती और टाइम हमारा इतना होता है। वैसे तो हम 3-4 घंटे का सेशन भी कर सकते हैं गाइस, लेकिन फिर आप लोग कहेंगे कि आइंदा इन लोगों की शक्लें नहीं देखनी। तो हमने वो जो टॉर्चर है वो कम करने के लिए मैं सोचा कि व्हाई डोंट वी ब्रेक इट इनटू अ सेपरेट डिस्कशन। सो वीव गैदर्ड हियर टुडे, लेडीज एंड जेंटलमैन, टू टॉक अबाउट सुन मेरे दिल एंड दुनियापुर, एंड लेट अस नो इफ यू वांट अस टू टॉक अबाउट एनी अदर drama. So, Sadaf, what would you like to start with? Whatever you feel like talking about first, please go ahead. Okay, Mavish, have you caught up on Duniyapur? Because Yes. I remember you weren't that, and I can Yeah. understand, Yeah. right? I know you weren't like शुरू में आपको हो रहा था कि यार वही चीज है, and I was kind of excited, and now then I kind of left it, not left it, but Hmm. I was like I wasn't as eager to watch it as I was other dramas, but now I'm back in the fray again, and yeah, I caught up. Hmm. Hmm. Now, Hmm. why and one of the reasons for me as well, मुझे ये था, like दूजे को कुछ मुक्के मारते रहेंगे, तो it's not me. Hmm. I can understand, and it like certain dramas you say, okay, Hmm. ठीक है, okay, Hmm. दुनियापुर की setting ये है कि Yeah. it's a state within a state, Yeah. and you have the Nawabs, the nasty hereditary Nawabs on one side with Yeah. Manzar Sabai, Hmm. and his last son. Hmm. We'll try not to give नो वी spoilers. विल। हेलो, स्पॉयलर्स हेड नहीं देखा, देख के वापस अच्छा, आओ। चलो, हाँ, चलो स्पॉयलर्स ठीक हेड, है, चलो जी, शुरू ठीक करो। है। एनीवे, रमशा खान उनकी बेटी है, नवाब साहब बड़े इवल है और वो हर वक्त शादियां करने का शौक है। बच्चों की शादियां नहीं करवाते, अपनी जवानी उनकी खत्म नहीं होती। एंड on the other side, and this is where I picked up that I have to persevere with this drama. In the हम्म। beginning I was like, मैंने नहीं ये देखना, हम्म। and because of the name, हम्म। जो नुमान एजाज का नाम है, नौरोज हम्म। आदम, हम्म। thinking unusual name. I mean, it's हम्म। not totally unusual. Heard of हम्म। people say it, but हम्म। it's like the new man. द न्यू मैन। नए हम्म। जमाने का नया आदमी. I thought, हम्म। okay, the writer is thinking about something. हम्म। So anyway, on the other side, you have the upstarts, and they हम्म। have taken over Duniyapur. हम्म। Police are nowhere. Sami Khan is humiliated ritually, हम्म। who is the लिटरली, या। हम्म। SHO, right? हम्म। So you have these two factions fighting, and in the what sets up दुश्मनी उन्होंने establish की, हम्म। and what they did was in the beginning, there is an incident, हम्म। a terrible incident, and of course the eldest son Nayab Adam, who plays kind of like वो जो everybody who sees The Godfather, they know that one of the sons, the eldest son Sunny, was kind of like hyperactive, reactionary kind of attitude, and the younger son Mikey is a sensible, more thinking, laid back person. So Khushal Khan plays that kind of Mikey character. He is the younger son. He's more thinking. He doesn't really want to take that much part in this thing. And Ali Reza plays to great effect the older reactionary, jazbati, easily manipulated son. हम्म। So, I think I was kind of thinking this is boring. This is like, आपस में लड़ रहे फॉर्मूले, हाँ। हैं, formulaic. Then this week's episode was like, ah, थोड़ा ठहराव आया एपिसोड में, थोड़ी सी समझ आई, थोड़ी सी you saw some depth. I mean, I don't know how long it's gonna last. हम्म। आपको कैसे लगा? Okay, so yes, it is because like I think you and I were also discussing it off this video, is that हम्म, some of the things which were too जैसे वो हम कहते हैं ना, कुछ elements यहाँ के उठाए, elements वहाँ के उठाए, और फिर एक नई हम्म, खिचड़ी बनाई with like Godfather और Game of Thrones and Mirzapur and these kind of elements उन्होंने उठाए जो कि हमें दिख रहा है। इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान में ये एग्जिस्ट करता है, दी स्टेट विद इन स्टेट वाली जो सेटअप्स हैं, जो छोटे छोटे फ्यूडल लॉर्ड्स ने, गैंग वॉर्स ने जो इस तरह के एरियाज में बनाई हुई है, वो एग्जिस्ट करता है। तो उसके ऊपर स्टोरी तो बनाना इज नॉट अ बैड आइडिया एट ऑल। नाउ अगेन वही क्वेश्चन जो हम पूछ रहे थे कि इज विल इट लिव अप टू दैट लेवल ऑफ रियलिटी? नाउ अगेन वी वर फ्रॉम द कॉस्ट्यूम्स एंड फ्रॉम द सेट डिजाइंस वी वर सपोज टू बिलीव दैट नो, यू आर गोइंग टू हैव टू सस्पेंड सम पोर्शन ऑफ योर रियलिटी, बिकॉज क्योंकि ना ये सिंध है, ना पंजाब है, ना हम्म, बलूचिस्तान है, ना क्या है, ना खैबर पख्तूनख्वा है, तो क्या है तो नहीं समझ में आ रहा। लेकिन चले, हम फिर भी कहते हैं कि ठीक है, हम एक्सेप्ट करते हैं कि ये एक ऐसा लैंड है
एक एक्स जगह लैंड है जहाँ पे ये होता है। तो जो मेरी इनिशियल थॉट्स थी वो काफी प्रॉमिसिंग थी, मैंने आपको पहले भी मतलब अपने डिस्कशन में भी कहा था कि मुझे इनिशियली तो बहुत अच्छा लगा था। फिर जब मैं सेकंड थर्ड एपिसोड में वो जो नवाब और शादियां और तुम ये लो और मैं ये ले लूं और उसको पकड़ के ले गए, आई वॉज अ बिट नो इट्स टू सून एंड आई फेल्ट दैट दे वर इन सच अ हरी टू नॉट लेट द ऑडियंस pick up on where they've picked up what from. So they were in too hurry to like join these elements and move it so fast that you don't know कि ये कहाँ कहाँ से इन्होंने पैचेस उठा के एक क्विल्ट बनाया है. What like you, I also was, I kind of like pause. I'm like, that's interesting. But it wasn't for me. It wasn't the Therao. I think it's still Hmm. very fast paced. I think it's the changing nature of the character's intentions. And I think that is where the believability, or I would say the attraction comes in. For example, you have this character of Ramsha who initially uh, didn't want to do anything with Duniyapur, but now she does. Then you have Khushal's character, who initially was a very straight character, but now he is out for revenge and justice and bringing his sister back. Then you have the sister who's losing her mind, again reminding you very much of Sansa Stark. So Game of Thrones वाले elements तो बहुत ज्यादा हैं. Or insane son, and then there were little dialogues which made me go like, okay, yeah, this if they build on this, it'll be really cool. Like one of the dialogues was that मेरा कभी कभी दिल चाहता था कि मैं आपको जान से मार दूं. तो हसन न्याजी का किरदार है जो उसका बेटा होता है. Yeah, that was an excellent dialogue. Yeah, and Yeah. that whole build up was also that came at the Mm. right moment where you're like, why is this insane man doing this? And to hear it from your own son in a very casual, like a conversational sort of way was a good touch. And then another thing which really got me was Ramsha's dialogue along the same lines कि आपको तो अपनी चालाकियों से ही फुर्सत नहीं है, क्या हो जाता अगर नायाब चला जाता तो आज देखिए मेरा भाई मर गया है. तो आई थिंक इस तरह की जो कुछ रियलिटी और कुछ ब्रूटल किस्म के कमबैक्स हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं. Or I think that is what will bring some of the audiences back wanting more from Duniyapur. Also, props to Khushal Khan. That one scene is the strongest scene in the whole episode. Where in that other episode where I think it's episode 6, where he begs Numane Jaz to not give the daughter away. And And it's not episode 6. This is what it's 4. I think it's 4. 4 of yeah sorry yes 4. I'm So forgetting, yeah. उसमें जब वो बेग करता है कि प्लीज आप मत जाए, मैं आपको दुनिया फोड़ ला के दूंगा एंड एवरीथिंग. सो ऑब्वियसली नुमान एजाज के सामने इस तरह की एक्टिंग करना बहुत बड़ी बात है. तो खुशहाल बहुत अच्छे एक्टर हैं तो उनको प्रॉप्स जरूर जाता है. आई थिंक दैट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सीन्स दैट स्टूड आउट फॉर मी. सच अ गुड एक्टर. एंड और मुझे एक और चीज जो बहुत अच्छी लगी सदफ इस ड्रामे के बारे में वो ये लगी कि एक क्वेश्चन आपको सोचने पे मजबूर करते हैं. जब वो कहता है ना कि ऐसे जो उसको कहता है कि भाई आप लोग क्यों नहीं कुछ करते एंड you're a disgrace and what all he's telling the थानेदार. तो not the थानेदार, the other constables. तो they go like सर यहाँ तो कोई क्राइम ही नहीं होता पर एफआईआर रजिस्टर खोल के देख लें तो कोई क्राइम रिपोर्ट ही नहीं होता. It's such an ironic kind of a statement, and it also makes you think the question of state within a state and how Right. they exist. It's not about and it also makes you question कि okay, लॉ का मकसद क्या है या सोसाइटी का ऑर्गेनाइज सोसाइटी का मकसद क्या है. और मे बी इज जस्ट मी बीइंग स्टूपिड एंड मी बीइंग लाइक माय सोशियोलॉजी टीचर सेल्फ. लेकिन मैं वो एक वो कहते हैं ना कि अच्छा अगर हमने एक सोसाइटी में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो हम कहते हैं हम करते हैं कि हम Hmm. बिलीव करेंगे कि ये एक नेशन होती है, नेशन के अंदर एक एग्जीक्यूटिव होता है, ब्यूरोक्रेसी होती है, पुलिस होती है, लॉज होते हैं, ये जो एक ट्रैफिक. फ्रेमवर्क एक हमारे जहन फ्रेमवर्क में होता है एक हमारे जहन फ्रेमवर्क. में होता है, हम उसको करते हैं, हम अपना आईडी कार्ड बनवाते हैं, हम साइन करते हैं कि हम सिटीजन ऑफ सो एंड सो हम्म. कंट्री हैं. तो इन सब चीजों का मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि स्टेट आपको प्रोटेक्शन देती है, स्टेट आपको आइडेंटिटी देती है, वगैरह वगैरह वगैरह. तो लेकिन जब आप इस तरह के माइक्रोकॉज्म्स में देखते हैं कि सोसाइटी कैसे कभी इस तरह की सोसाइटीज कैसे एग्जिस्ट करती हैं जहाँ पे एक अलग ही तरीके का लेन देन है, वो कहते हैं ना आगे मिठाई बांट दो इन लोगों में, सर मिठाई के थोड़े पैसे मिल जाते. तो एट द एंड ऑफ इट इट्स अ वेरी, आई थिंक दैट देयर इज दिस वेरी एवोल्यूशनरी एंड अ वेरी बेसल काइंड ऑफ अ थीम गोइंग ऑन देयर. और जैसे आप कह रही हैं ना नौरोज आदम और नाउ यू हैव द नवाब्स आर व्हाट द इवॉल्व्ड ह्यूमन एंड नौरोज No, no, आदम. no. They Noroz Adam, the young upstarts. हम्म. जाहिर है वो उनका नौकर था. बार बार हम्म. वो नवाब्स कहते हैं. And हम्म. the Nawabs are the hereditary rulers, right? And हम्म. sometimes it's and what really fascinated me was that the attack was not initiated by either by party, by the party, it's another right? third party, yeah.
थर्ड हम्म पार्टी जो अटैक इनिशिएट कर रहा था, इट वाज द पुलिस, एंड दे वर डूइंग दिस, इतनी ब्लडशेड हुई है, एंड दे हम्म वर डूइंग दिस ऑस्टेंसिबली। देखो ना, उनका ऊपर से पर्पस था हम्म सिक्योरिटी, हम्म right? And I think we can all understand what Radhen Shah is hinting at. हम्म And is that there is, of course, in every country a certain establishment, हम्म and वो establishment जो है, when it needs to, it can do, it is absolutely ruthless. And we find this in everywhere, America. We everywhere, find every it all countries, everywhere. everywhere. Yeah. America, India, Pakistan. It's just obvious in certain places and it's less obvious in others. वो जहाँ जैसे, स्टेट क्राफ्ट थोड़ी सी इवॉल्व होती है वहां पे right, एस्टेब्लिशमेंट के काम शाम इतने नहीं दिखते, जहाँ इतनी ऑब्वियस वहां थोड़ी बड़े, क्रूड होती है वहां पे दिख right, जाता है। हाँ। right. So he says वो हमने करवाया था to the policeman, and the policeman, and I really adore Sami Khan's या acting, because ही इज he is ब्रिलियंट। he is one of those people, overacting तो उनसे होती नहीं है. He नहीं, is बिल्कुल so, and मेजर्ड। suddenly he is empowered. कि हम्म अच्छा, हम लोगों ने ये करवाया था. It was like absolutely एंड डू यू suddenly नोटिस, zero to hero वो बन जाता है. हाँ, एंड डू यू नोटिस ही इज योर एंड माई आई इनटू दुनियापुर। Exactly. He is as flabbergasted, and as the meme says, my flabbers be gasted daily in Duniyapur. So your flabbers will be gasted daily in Duniyapur. Okay, let's give a break to Radhen Shah, because I was like down on him like this, like ये Hmm. क्या writer है. Hmm. लेकिन what has been missing, and I said this in my review in my column in Dawn, कि Shafat, I think Shafat, शाहिद शफात, शाहिद शफात। Shahid Shafat, yeah. जिनको शेदी भाई भी कहा जाता है प्यार से। वो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया इन एज इन कैप्चरिंग द एसेंस ऑफ द एक्शन एंड द वायलेंस. हम्म लेकिन वो नैरेटिव में एक टाइटनेस होती है ना, बिकॉज इफ यू लुक एट इट नाउ फ्रॉम दिस एंगल, जब आप डिस्टेंस से देखते हो, हम्म ऑल दैट वायलेंस, एंगर, एंड वो जो आपस में कश्मकश है, हम्म दिस एपिसोड वाज सपोज टू गिव यू अ शॉक. क्योंकि हम्म आपके जहन में है कि देयर आर जस्ट टू पार्टीज है और आपस में लड़ रहे हैं, और द हम्म स्टेट इज इनोसेंट इन ऑल ऑफ इट, एंड काश के स्टेट की रिट होती, या बिकॉज वी हम्म ऑफ्टन थिंक अबाउट दिस, कि हम्म वो काश पुलिस काम हमारी करती, काश ये, एंड देन यू फाइंड आउट suddenly everything is transposed, and you find out that the state is actually playing with these people, हम्म right? Because they cannot control them. State का भी point of view वो बताते हैं कि they cannot हम्म control these people. So हम्म what they do is they play with दे them, and एड what फ्यूल टू द फायर। हाँ। yeah, he said कि वो जो हंगामा हमने करवाया था, हम्म because the Nawab is much easier to deal with than Noroz Adam. हम्म Noroz Adam के तो demands हैं, हम्म नवाब के तो कोई demands नहीं है. He'll He's just just keep happy in his those weird in fiefdom। control. हाँ। Yeah, क्योंकि वो सदियों से चल रहा है उनका ना. So हम्म let's give Radhen Shah credit राउंड where ऑफ credit अप्लॉज, is यस due. फॉर श्योर। क्योंकि I was very, मैंने and this is the difference between us and other reviewers. We are not chasing agendas. मुझे जिससे नो। नफरत भी होती है, the minute वो अच्छा काम करते हैं, I'm going, yes sir, you deserve an award. Right? And I बदर think you're the महमूद, same way. बदर Yeah, महमूद but केस। yeah, all हम्म these people जिन्होंने अच्छा काम किया, I say, oh, I'm so fed up with XYZ actor, यही काम करता है. जब वो अच्छा काम करते हैं, I'm like, yes, I'm your fan. Right? आई Because थिंक I'm a सदफ fan एक of good work. बिल्कुल आपने सही कहा, यूर अ फैन ऑफ गुड वर्क। एंड रिव्यू करने का मकसद ये होता है कि हम जिस चीज Hmm. को समझते हैं कि इट्स अ पर्सनल थिंग, जो कि स्टैंड कल्चर बिलीव Hmm. करता है, ठीक है, कि अगर मेरे मेरे फेवरेट का ड्रामा है तो चाहे जैसा भी हो मैं उसकी तारीफ करूंगा। आई थिंक, और थोड़ा ये अनफॉर्चुनेटली कुछ रिव्यूअर्स भी ये काम करते हैं, लेकिन मेरे और आपका, एंड द रीजन व्हाई आई लव टॉकिंग टू यू एंड व्हाई आई बिलीव्ड दैट व्हाट वी, एंड दैट इज व्हाई सर वी गेट दैट काइंड Hmm. ऑफ कमेंट्री एज वेल, कि लोग हमारा पूरा सुनते हैं, सारी बातें सुनते हो यार, आप लोगों को भी राउंड ऑफ अप्लॉज। लेकिन ये कि सदफ, मैं ये कहती हूँ कि हम लोग का इसलिए भी होता है क्योंकि देखिए, मेरा जो फिलॉसफी है, मेरी जो थॉट प्रोसेस है वो ये है Hmm. कि हम किसी भी चीज को एक तो एक पर्सन के प्रिज्म से नहीं देख सकते कि ये एक्टर अच्छा है देयरफॉर इस प्रोजेक्ट के बारे में जो जो बातें होंगी, मतलब आई हैव लव्ड सो मेनी एक्टर्स, आई हैव नॉट लाइक देयर प्रोजेक्ट्स एंड आई हैव जस्टिफाइड इट विद Hmm. व्हाट एग्जैक्टली वाज ईदर politically wrong with it or technically wrong with it। तो दो एस्पेक्ट्स होते हैं जिन पे आप क्रिटिक कर सकते हो, या आप पॉलिटिक्स पे उसकी क्रिटिक कर सकते हो, इज इट वट एवर द जेंडर पॉलिटिक्स आर, और द सोशो पोलिटिकल कॉमेंट्री यू कैन मेक, और यू कैन से नो आई डोंट लाइक द कलर्स, आई डोंट थिंक दिस वाज शॉट वेल। And I think that not, it's so reductive to reduce one project into Aiza's project or Sajjal's project or this project, Yes.
because on their own we know they're good actors. Obviously we're not going to say कि सजल ने अच्छी एक्टिंग नहीं की, तो हम नहीं कहेंगे ना कभी भी, हमें पता है सजल अच्छी एक्टिंग because करेगी. it's not possible, It's right? not So possible. she's a good She has actor, established right? herself, for so long. Hmm. She's not a newbie. For a newbie or for an But initial, I may not like a project that she's you in. may not मुझे like a वो project. इश्क You may not लाख. like a story. I didn't like Yeah, Ishkila either, and I love Sajal, okay? But I did yeah. not like Ishkila. I wasn't that big of a fan of Kuch Ankahi either. I feel like maybe Zarpato Ka Ban is a better drama than Kuch Ankahi. Hmm. So people need to just like kind of calm down and let reviewers at least justify what, and believe us, we do not have agendas at all. I know for sure about me and Sadaf दूसरों का नहीं कह सकती. अच्छा Sadaf, coming back to दुनियापुर, ये जो Hmm. आपने कुछ बात की ना कि डायरेक्शन में, पहले मैं डायरेक्शन की बात कर रही थी फिर मैं राइटिंग के ऊपर आऊंगी. डायरेक्शन में जो ग्राफिक वायलेंस है और जो एक उनने कुछ एलिमेंट्स ऐसे दिखाई, लाइक यू कैन हियर दैट गर्ल स्क्रीमिंग व्हेन दैट मैन इज That was a horrific scene, but horrific scene. I like that. That was aesthetically good. It showed you the violence without showing you the Yeah, violence. and also I think that that's enough. Like you can Yeah. establish it with that, so people need not. I mean, it's enough for your imagination. So let that imagination Hmm. do the work. I feel like some of those styles in the episodes in the drama were really good. The way that he added the screaming, the way that that rocket launcher goes and it explodes and the car goes off the cliff, or no, sorry, the bridge. That is really well done. What it's not well done, and why you're picking up on the same thing I picked up on, is because there are certain moments and there are certain imageries which are there for impact only, and you have to create them at that moment, which he did not, which the director did not. Two points in example. एक तो आपने वो जो बोला, तौसीक हैदर साहब का जो कैरेक्टर है, जो उनका जो बॉस होता है शमी खान का, वो कहते हैं कि जी ये तो अटैक हमने करवाया था. वो रवानी में ही बोल गया वो डायलॉग. आई हैड टू लाइक व्हाट, मैं हैड टू गो बैक. Yeah. And I I had was to go like, back too. yeah, I was like, एक minute, ये. Hang And then, on. huh, and then I'm like, no, that moment needed either a pause or a close up or a close shot or a small reflection or a small reaction from Sami. ये होना चाहिए था, और ये डायरेक्टर का प्रॉब्लम है, ये और किसी का प्रॉब्लम नहीं है. दूसरी चीज जो उन्होंने गड़बड़ की, जब उन दोनों के बेटे मरते हैं, वो उधर नायाब मर वो जाता है. रोते ही नहीं है, लगता ही नहीं कि उनको अच्छा, कुछ रोते भी फील नहीं हो. है. और डायरेक्टर का प्रॉब्लम, डायरेक्टर ने जहां मुझे लगता है जो हाँ, हाँ. उनसे गलती हो गई वो ये हो गई, वो ये इस तरह हुई कि जो आप एज एन ऑडियंस देख रहे होते हो ना, मैं वेट करती रही, मैं आगे पीछे रिवाइंड कर करके देखती रही कि वो जो एक ड्रोन शॉट उनका है, उनका एक मास्टर शॉट ड्रोन शॉट है, जो वो ऊपर हम्म, से नीचे ले रहे हैं, द कॉर्प्स इज देयर. Sometimes you need the close up of the reaction of the people and the shot of the dead body itself, हम्म. because to register with you कि this is what has happened. And I had to kind of like, एक मिनट, मर गए अच्छा. क्या? हाँ, मर गए क्या? कौन मरा? अच्छा ये मरे, ओ ओके ओके ओके, अच्छा वो लड़की की बात से पता चला है. That's a huge flaw in the direction. And while some of the other stuff is par excellence, अगर आप वो शॉट देखें जिसमें गाड़ी जाती है, वो इतनी स्मूथली एडिट हुआ है, वो इतना अच्छा कमाल का शॉट है, वो फिल्मी शॉट लग रहा है. और ऑन दी अदर हैंड आपने जो इम्पैक्ट वाला शॉट था वो आप खा गए, दो दो अच्छा, दो यू जगह नो खा गए. व्हाट दिस इज, ही वो जो मेन नैरेटिव है, देखो एक एक्शन शॉट्स होती हैं व्हिच ही इज हम्म. डन परफेक्टली. या या देखो या वो या. मैंने लिखा है कि वीडियो गेम की तरफ आ गए हैं, हम्म. बिकॉज यू नो दैट काइंड ऑफ लाइक ही स्टैब्ड, ही फॉल्स डाउन, देन ही वेक्स अप अगेन, या. राइट? एंड देन वो हम समझते हैं बड़ा बेटा मर गया लेकिन वो जिंदा होता है. दीज आर ऑल वीडियो गेम टाइप ठीक है. एक्शंस, which is fine and dandy. मुझे नहीं पसंद, आप मिडिल एज हाउसवाइफ. लेकिन जो यंगर पीपल, नो लेट्स बी ऑनेस्ट, तो No, but यंगर middle-aged पीपल, housewives are not a demographic that they should be ignoring at all, because they're yeah, also that's watching, true, that's and very they're true. also लेकिन watching Game of Thrones. They're also watching all these kind of shows and लेकिन dramas, and I don't want the tyranny of middle-aged housewives to there reign. should be no tyranny of any demographic, to be honest. But yeah, okay, go ahead. Yeah. So what you were saying बट माई about? माई पॉइंट इज, चलो आप ना दूसरी एक डेमोग्राफिक को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हो, फाइन एंड गुड, आई एम विद यू गाय. लेकिन व्हाट यू नीड टू डू इज, हम हम धूप में बाल नहीं सफेद किए हुए, वी नो, राइट, के नैरेटिव को पिरोना होता है. यू हैव टू हैव मोमेंट्स दैट Hmm. एंकर द नैरेटिव, जो आप कह Hmm. रही हैं, Hmm. राइट? जो चेहरों से तसरात के से पता लगता है, अगर वो प्लॉटिंग कर रही है चचा की बेटी, Hmm. उसका चेहरा दिखाए ना ऐसे सोचते हुए कुछ करते हुए, ताकि एंड जस्ट फॉर अ मोमेंट चाहिए वो चेहरा, एंड वो Hmm. ऑडियंस एकदम क्लिक कर जाता है कि दिस इज समथिंग इज गोइंग ऑन हियर. Hmm. एंड सेम विद अ फ्यू अदर्स, एंड आई मीन शी इज नॉट अ particularly good actress either, so Hmm. I think she's new at this, but
चलो एटलीस्ट शी ट्राइंग. आई मीन द अदर गर्ल, द वन हु इज बीइंग, वो जो बहन है, शी हम्म. इज एक्चुअली डूइंग अ गुड जॉब. द वो वन हु जो गेट्स ऐसे मैरिड टू द नवाब, राइट? नो yeah, नो, the शी one इज who वेरी गुड. got sexually assaulted. या I वेरी would गुड. say she's doing an amazing job. या क्योंकि या वो ऐसे dazed or confused, or she did it, and it was all very believable. वेरी Also, ऑर्गेनिक, यस. the बट villains दैट are अदर looking एक्ट्रेस good. इज नॉट गुड, बाय द वे. द यूसुफ बशीर Which one? कुरैशी साहब की जो बेटी प्ले कर रही है, जो कि Which? द अदर कजन हु इज प्लॉटिंग, द प्लॉटिंग Yeah, कजन. she's right now she's not up there, या and I नो. think that is the director. The director needs to give instruction, और वो हम्म. उनके चेहरे के ऊपर थोड़ी सी फोकस लाते, हमें हम्म. पता चलता है, because that is the easiest way to tell a conspirator, हम्म. right? जो उनके चेहरे की बहुत फ्लैट एक्सप्रेशन डिलीवरी है होती उसकी, है. हाँ, बड़ी Yeah, फ्लैट and डिलीवरी है उस she बच्चे की. hasn't been given a chance to, because close up तो उसने लिया नहीं. बट And क्लोजअप के अलावा उसकी yeah, डिलीवरी भी ठीक नहीं है सदफ, उस लड़की की, yeah. बच्ची की डिलीवरी भी ठीक नहीं है. हालांकि it's such an important role, और क्रिटिकल. और वो साहब बहुत अच्छे it हैं, is a यूसुफ बशीर. linchpin role. She हाँ. is the one who, because that girl has done absolutely nothing wrong. जो उसकी cousin होती है, हाँ. she's done nothing wrong. सिर्फ एक लड़के को पसंद किया. हाँ. And as the mother reminds Noroz Adam, हम्म. who are हम्म. you? तुमने भी मुझे पसंद किया था. तो what, हम्म. and the reality is, and this is what the villains say, कि आप समझते हो कि नवाब बुरा है and Noroz Adam is a good guy, but Yeah, in they're the end, all the sides of the same coin. Yeah, they're yeah, I all the loved same. that. I loved that. Yeah. Yeah, that was too good. और सदब, And आपने ये बिल्कुल अच्छी बात की कि ये जो yeah. उसके चेहरे के तासुरात, और वो जो उसको उसको बात करने की, मतलब कोई ठहराव Hmm. होता है ना, जो आप ठहराव एक्सपेक्ट करते हैं. जैसे काशिफ निसार की एग्जांपल ले लेते हैं. काशिफ निसार बहुत स्मॉल मोमेंट्स में बहुत बड़ा बम फोड़ते हैं कभी कभी. जैसे Hmm. अगर आप रकीब से की एग्जांपल देते हैं, सेम एक्ट, सिमिलर एक्टर्स नुमान इजाज साहब थे, और जब उनको पता चलता है, कुछ मोमेंट्स ऐसे उस ड्रामे में थे कि उनको कुछ पता चलता है कि उसकी बीवी ने ये जो उनकी एक्स होती हैं, हदीका का, उनका किरदार ये होता है, वो कहता है वो मारता था, वो ये करता, जो भी करता था, उस मोमेंट को वो वहां जमा देते हैं. तो ये एक होता है Hmm. टैलेंट डायरेक्टर के अंदर. वो डायरेक्टर उस मोमेंट को कैसे लेके चलता है, उस वक्त प्रिसाइज मोमेंट पे ढन 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 नहीं करना शुरू कर देता कि ऑडियंस भी उसको थोड़ा सा एक पॉज देता है और एक साइलेंस देता है. और गेम ऑफ थ्रोन्स अगर आप देखें, अगर गेम ऑफ थ्रोन्स की कोई भी एपिसोड आपने देखी हो, अगर आप कुछ सीन्स भी देख लें, तो वो काफी होते हैं कि व्हेन इवन इफ अ कैरेक्टर इज गोइंग इनटू अ हाई पिच्ड मोनोलॉग, विच टिरियन लैनिस्टर द ड्वार्फ जो कि उनका कैरेक्टर था, अगर वो इस तरह का डायलॉग मारते हैं जब भी, तो भी हिज वॉइस इज echoing, देयर इज अ साउंड which is also a character Right. in your There show. has to be a midpoint between Star Plus हाँ 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 हाँ. and हमारे पाकिस्तानी dramas, and there has हाँ. to be a midpoint हम्म. between that, जिसमें आप emphasize. I think this is like जब आप and this is what they say, fully conceptualizing the story, which हम्म. is what good director. And I think Shahid Shafat will do it in the future because नहीं he's नहीं, caught बाकी it. काम सही कर रहे Yeah, हैं, बस यहाँ पे काम कहीं कहीं सही है. मुझे लगता है Yeah. कि यार जिस मोमेंट पे इम्पैक्ट मुझे चाहिए था, और मैं शायद एक, मैं अपने आप को डिल्यूजनल हूँ, शायद मैं अपने आप को एक डिसर्निंग ऑडियंस मेंबर कहती हूँ, लेकिन Hmm. ये कि मैं कहती हूँ कि यार नहीं, मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर वो ये कर देते, तो उनकी कहानी का जो इम्पैक्ट था ना, वो बहुत बढ़ जाता. So I think that people should watch Duniyapur. It's हम्म. definitely caught up. You might some people might even want to skip the beginning, हम्म. right? But then again, you'll miss all the action. हम्म. So it's a thinking project. It's not an idiot project like कि action ही action है. So suddenly it has got me, and it suddenly might lose me as well. Who knows? But लेकिन you know what? I'm going to give them the benefit of the doubt because बड़ी investment की है. I'm a big खुशहाल fan. I हम्म. really do. He's a very organic actor. और हम्म. देखो, we've got such a team. But I will say to all our actresses in particular, हम्म. Botox is not the answer. जब हमारे बुजुर्ग ही इतना बोटॉक्स लगा लें कि उनसे बोला ना जाए, तो it's okay to be old. I'm old. हम्म. असल में कोई बात. इंडस्ट्री अब बड़ी ब्रूटल हो गई है. जिस दुनिया में हम जी रहे हैं ना, मैं तो हम्म. यहाँ पे देखती हूँ 20-20 साल की लड़कियों ने कराया हुआ होता है, जस्ट टू गेट दैट काइंड ऑफ लुक दैट दे थिंक इज ब्यूटिफुल. बट anyway, okay, so the other drama that we'll be discussing this week, guys, is called Sunn Mere Dil. So this is just a two drama discussion, and hope you guys catch Duniyapur. I think like Sadaf, I agree that Duniyapur is something that is worth your time. You should definitely get हम्म. on to that train. Sun Mere Dil, written by Khalil Rahman Qamar Saab, directed by Haseeb Hassan, starring Maya Ali and Wahaj Ali and Osama Khan, Hiramani, and और भी सबा हमीद हैं, और बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं हमारे. बहुत बड़ा एक ट्विस्ट आया है रिसेंट एपिसोड में सदफ, जो मैंने उसके साथ कैचअप किया,
और अगेन इट लूजेस मी ऑल्सो बिकॉज आई एम लाइक अल्लाह, फिर आ गया लंबा लंबा डायलॉग, और वो ये जो इश्क है, अब डायलॉग फिर ये जो इश्क है. So it takes a lot of patience sometimes to power through some of the episodes, but still, again, it is one of those dramas when you will get invested, you will get invested. It's like, again, Khalil Rahman Qamar has that thing, but again, it's also the power of some coolest actors that we have. And I think that that moment between Wahaj and Maya when they lock eyes Beautiful. is, oh my God, like I just wanted to And rewind I it and love watch the it. fact, I'm gonna congratulate Maya, नहीं ओवर द टॉप मेकअप किया, नहीं ऐसे ना किया बोटॉक्स किया कहलाया है ना रेड कुछ और वाला। किया है, हाँ. और वो लाइटें ना, वो उसने 10-15 लाइटें नहीं अपने ऊपर डाली। एंड हाँ. लेट्स गिव हसीब हसन क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज ड्यू। हम्म. जिस तरह से उन्होंने फिल्माया, इट्स ब्यूटीफुल। आई थिंक हम्म. आई माइट नॉट हैव वॉच्ड इट, लेकिन हसीब हसन ने इस कदर प्यारे तरीके से हर चीज की लाइटिंग ही देख लो उनकी। हम्म. लाइट भाई कुछ सीखो लोगो, राइट? हम्म. आई वांट दैट लाइटिंग, ताकि मैं ऐसे हसीन लगूं और मेरी ऐसे पलकें उठे और कोई मेरी तरफ देखे। बट वो अनफॉर्चुनेटली होता नहीं। हाँ, टू So लेट नाउ फॉर अस सदफ. yeah, a bit too हाँ. late, right? हाँ. हाँ। तो नहीं, आप, आई एग्री वो, लेकिन मुझे फिल्टर से एतराज है सदफ, आपको फिल्टर से एतराज Yeah. नहीं जैसे जो हसीब ने लगाया हुआ नहीं है? है वो चलेगा फिल्टर। अब इट्स दैट काइंड ऑफ फैंटेसी एलिमेंट स्टोरी समटाइम्स, ओके. लाइक हम लोग देखो, इट्स नॉट फेयर। मैं काशिफ निसार इज अ ब्रिलियंट डायरेक्टर, उनको हम कहते हैं भाई भाई हम वो मिलके लाइट कोई लगा film लो, करेंगे, दो ये लाइट लाइट लगा चेंज लो. देंगे आपके लिए। तो जहाँ किसी ने किया है तो लेट्स अप्रिशिएट इट। इट्स हम्म. दैट काइंड ऑफ स्टोरी इन विच यू हैव हाई रोमांस, राइट? हम्म. हाई दिस व्हाटएवर। हम्म. So I'm going to say a lot of beautiful people. Hira Mani is looking like, I mean, what is that? She's aging backwards, right? या शी इज खूबसूरत एब्सोल्युटली, लग रही है। या सो And ब्यूटीफुल. but and Maya, I will appreciate her because she could have done so many things differently. तो हम्म. उसने आराम से अपने रोल को अपनाया, ओवर हम्म. द टॉप नहीं किया कि एनीथिंग। अच्छा, आप नहीं चाहती मैं काम करूं, हम्म. मैं नहीं काम करती। एंड दैट सीन बिटवीन फादर एंड डॉटर किल्ड मी हम्म. yesterday. हम्म. I think you mentioned it too, वो जो जिस तरह हसीब हसन ने वो फिल्माया है ना, शी हम्म. इज लुकिंग एट हर फादर एंड जैसे आम तौर पे इंसान छोड़ के जाता है, ये आपका पानी है, ये है, हम्म. ये बहुत है। एंड देन शी जस्ट लुक्स एट हिम के this is my father. I hope I never lose you. You're there. And it was such a poignant, beautiful moment because I've हम्म. done this myself. हम्म. Now, as your parents reach a certain age, you do that. You look at them and you think, अल्लाह करे कि हमारे करीब ही आप रहे, दूर ना जाएं, कहीं ना जाएं, और वो right? मोमेंट And आता है then, इंसान की जिंदगी yeah, में when sometimes you're yeah, leaving them and you're like I don't know when I'll see you again and how I'll see yeah. you again. Yeah. तो वो एकदम देखती है। एंड आई रियली ब्यूटीफुल बिटवीन मोहम्मद सैयद अहमद साहब एंड हम्म. माया अली, दैट माया. वाज really gorgeous. हम्म. I really enjoyed that. Mm. मेरा तो यही टेक है, मुझे तो जो मैंने कैचअप किया है आई थिंक कि Mm. जो आप बिल्कुल सही कह रही हैं माया के बारे में, माया की अच्छी बात ये है एज एन एक्ट्रेस कि माया रोते हुए घबराती नहीं है. और माया रोते हुए ना, उसको मुझे लगता है वो शी इज वन ऑफ दोज एक्ट्रेसेस, जो कि हमारी बहुत सारी हैं एक्ट्रेसेस ऐसी जो इतनी अच्छी हैं कि वो जब रोती हैं या जब उनको बेहाल होना होता है तो वो वाकई बेहाल लगती हैं, वो बर्बाद लगती हैं. वो उनको देख के ये नहीं होता कि अच्छा जिंदगी में तूफान आया हुआ है लेकिन बालों की लट इधर से उधर नहीं हो रही. तो वो इतनी राइट। और मेकअप इतना परफेक्ट है, और लिपस्टिक तो हाँ भी नहीं। लगाई होती है, मस्कारा भी पूरा है. तो माया एक जनरली नेचुरली भी बहुत खूबसूरत हसीन औरत है. और एज अ पर्सन ऑल्सो शी इज जस्ट जेम. तो आई थिंक एक उसकी इनर गुडनेस भी है जो शाइन करती है, जो कि आई थिंक अक्सर लोगों की करती है जो होते हैं ऐसे. हम्म, और माया की जो एज एन एक्ट्रेस जो उसकी एक बहुत और अच्छी बात ये भी है कि वो जैसे आपने कहा ना कि वो ढल जाती है और वो नेचुरल रहती है. तो इट्स नॉट जस्ट हर face which is natural in a sea of actresses who have really changed their faces. She's also natural in terms of her delivery and performances. um, मुझे उसका और उसके भाई का सीन भी बहुत अच्छा लगा था. जो इसमें वो हम्म। और उसमें माया का काम मुझे बहुत अच्छा लगा. आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ शाबिर कदवानी येट बिकॉज एक तो ही रिमाइंड्स मी सो मच ऑफ हिज डैड. इफ यू सीन He अब्दुल्ला does। कदवानीज इनिशियल ड्रामास, द वे दैट वो ही ऐसे टॉक्स लगता है इट्स जैसे बिल्कुल क्लोन हुआ है। क्लोन है. बिल्कुल क्लोन। वो जो बॉलीवुड फिल्मों में नहीं दिखाते थे ऋषि कपूर का बेटा भी ऋषि कपूर ही होता है. तो इट्स द सेम थिंग, हाँ। इट्स अब्दुल्ला कदवानी सन बीइंग अब्दुल्ला कदवानी. तो अगर आपने अब्दुल्ला कदवानी के आप लोगों ने गाइस पुराने ड्रामे देखे हो तो वो दिस इज हम्म। एग्जैक्टली व्हाट ही वाज लाइक. This guy is much younger. Obviously, Abdullah Kadwani Yeah. started much later.
तो आई थिंक दैट बॉय, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ येट, बट ही माइट कम इनटू हिज ओन लेटर. माया हाउएवर इज जस्ट अ क्लास अपार्ट. एंड आई थिंक आगे जाके जो कॉन्फ्लिक्ट अब बिल्ड होने वाला है, मेरा सिर्फ क्योंकि खलील साहब किसी को छूने नहीं देते अपनी स्क्रिप्ट, मेरा सिर्फ अगले स्क्रिप्ट के लिए, अगर खलील साहब बाय सम ऑफ चांस हमारी ये कोई प्लीज सुन लें, थोड़ा मेरे सा को उसको. डाउट है। हाँ, डाउट तो मुझे भी है, लेकिन मैं अब दिल की भड़ास निकालूं, सिर्फ आपके साथ बैठ के मैं करती हूँ हम्म। यही हूँ. तो मुझे दिल चाहता है कि कर ले अगर कर ले। क्योंकि आपके दिल की भी यही मुझे लगता है आवाज होगी, यस, उसको हंड्रेड थोड़ा सा परसेंट ऊपर पुल कर लो यार, उसको थोड़ा सा ऊपर पुल कर लो. वो थोड़ा सा टाइट करने दो उसको, डायरेक्टर को, इस चीज को, क्योंकि उससे एडिटिंग। इम्पैक्ट. एडिटिंग भाई, उसकी जरूरत, इस तरह के डायलॉग की बहुत सारे सीन ऐसे थे जिनमें उन डायलॉग्स की जरूरत ही नहीं थी, जहां बिला वजह वो बनना था. अच्छा, और वो मुझे उस मुनी आशिक का भी कोई पर्पस खास समझ में नहीं आता, आगे जाके शायद हो, लेकिन क्योंकि खलील साहब की कहानी में कोई भी चीज बिला वजह होती नहीं है सिवाय डायलॉग के. लेकिन ये कि वो मुनी आशिक मुझे, इट वाज अ बिट लाइक वो मेरी वजह से वहां जाना नहीं चाहती. बट क्यों नहीं जाना चाहती वो तुम्हारी वजह? तुम कौन हो भाई? यू आर जस्ट अ गाय हु क्रश्ड ऑन हर, बिग डील, आई मीन गर्ल्स डील विद इट. वो मॉडर्न, इतनी मॉडर्न लड़की तो है वो. तो ये कुछ नॉन सेंसिकल बातें लिखते हैं कभी कभी खलील साहब, जिसको जस्टिफाई ही नहीं करते, जिसका कोई सर पैर नहीं होता, एंड वी जस्ट सपोज टू एक्सेप्ट इट बिकॉज I खलील साहब think रोट it's इट. also a jump in generations, right? हम्म. I think it's very difficult. जो I think a lot of our writers, and particularly maybe we are all like this, हम्म. जो हमारी जवानी में एक रोमांस का एक फ्रेमिंग होती है, हॉट था, वो I हाँ. think it's very hard to get out कि भाई जमाना अब फर्क हो गया है, right? हम्म. I think as I keep saying, I've repeated this before, stand up girl spoiled me. It हाँ. has literally spoiled me for everything else. हम्म. And I was so happy when I saw, and I will not go into Kabhi Main Kabhi Tum, because Kabhi Main Kabhi Tum also took a lot of truths. They didn't sugarcoat it like I was हम्म. expecting. हम्म. So I think when you have this much honesty going on in dramas, हम्म. then ये जो है ना वो riddle me this, क्योंकि that's what it is, हम्म. लंबे लंबे dialogues. It's like एक पहेली बुझा रहे हैं, and then you're like, what? Huh? हम्म. And then a lot of people objected to some dialogues which I'd like to address. तो मैं हम्म. ना मत समझेगी. I agree. These are हम्म. not necessary such dialogues. And Khalil Saab's women, they are हम्म. always rather demanding. एक मंजली था, which was a big hit, I remember. हम्म. She, बेचारा Faris Shafi, उसका cousin होता है, he's in love with her. हम्म. And the heroine, played beautifully by Mahwash Ajaz, she makes him eat a piece of glass. Yeah, yeah, I you told me about it. I don't find that romantic. Hmm. I'm I sorry, there's also think that something wrong. the girl is a psychopath then. Yeah, and what it is, you see, इतनी strict होती हैं and all of this kind of stuff. But I mean, she's going like जहर खा लो. We don't need that. Really Yeah. don't. I mean, because you can push someone to suicide. एक्चुअली वो खलील साहब की अपनी प्रिज्म है ना, जिस प्रिज्म से वो औरत Hmm. को देखते हैं, उनको लगता है औरत एक हार्टलेस, क्रूअल, पी नॉट पीस बट एक ब्यूटीफुल गॉडेस होती है. शी इज अ क्रूअल Hoti गॉडेस. goddess. Yeah, हाँ, हॉटी hoti गॉडेस beauty. होती है, जैसे प्यारे अफजल में आयजा थी, मेरे पास तुम हो Hmm. में आयजा थी. लेकिन that made sense. Let's do this. नो बट देखो, वो तो कंस्ट्रक्ट प्यारे करते हैं ना अफजल, it वहां तक. made sense. हाँ, Yeah. हाँ. मगर नहीं, ये नहीं, इट डिड नॉट मेक सेंस एट अ लॉट ऑफ टाइम्स. आई लव्ड प्यारे अफजल, एंड आई थिंक इट इज खलील साहब्स बेस्ट वर्क, आई थिंक, ऑफ ऑल व्हाट आई हैव सीन. बट प्यारे अफजल में भी कहीं कहीं मुझे लगता था कि यार ये लड़की बिल्कुल ही को बदतमीज लड़की है, को बिल्कुल ही इसका दिमाग खराब है. नहीं, मुझे लगती थी वो अक्सर. अच्छा, अब अगर आप उसको कंपेयर करें, आई डोंट नो हाउ ओल्ड इज जेंटलमैन स्क्रिप्ट. जेंटलमैन में जो Hmm. खलील साहब ने जरनाब को लिखा है, वो एक बिल्कुल ही नॉनसेंस कैरेक्टर है, बिल्कुल कोई सेंस नहीं She was बनता उस very कैरेक्टर. soft. Soft Yeah. but also irrational. Like, and then he's Hmm. not showing her as soft. She's a powerful, influential journalist. And tell me, No, but how she many she was in powerful, touch with her influential? feminine side. Hmm? She was in touch with her feminine side a lot Yeah, more but than, say, Aida. still Hmm. inconsistent. Huh, a lot more than Isa, and very different than Isa's character, obviously. But My theory is that Suhaika character should have been molded into Zanab's. We didn't need Suhai as much as I love Suhai. But yeah. going back to Pyare Afzal, what I'll say in that girl's defense is, it is, what if Shurjina didn't marry Mustafa? Hmm. Right? Just think about it, because वो इतना loser होता है वो अफजल. Hmm. ही इज नो बॉडी, और वो एमफिल करना चाह रही होती है. वो इतनी पढ़ी लिखी अचीवर और मोहल्ले Hmm. की खूबसूरत और उस एरिया के अमीर आदमी की बेटी. Hmm. शी इज अ आइस प्रिंसेस. Hmm. एंड वो अफजल इज नो बॉडी.
हम्म। तो एंड आई रिमेम्बर राइटिंग दिस कि व्हाई शुड शी लुक एट हिम, क्योंकि उसको प्यार हो गया, हु इज ही। नहीं नहीं, मैं ये बात तो कह ही नहीं रही, मैं तो इस रोमांस पे हाँ। आई नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ उस किरदार हम्म। की अपनी जिंदगी, अपनी दुनिया, या अपनी उसका जो भी एक वर्ल्ड व्यू है, उस किरदार का वर्ल्ड व्यू, मैं उसकी बात कर रही हूँ। वो जिस तरह अपनी बहन से भी बात करती है, जिस तरह वो अपने बाप से, या जो भी अपने भी डिसीजंस जो लेती है, वो मुझे बहुत स्लाइटली नार्सिसिस्टिक होती है ना, शी इज अ quite वेरी narcissistic. But that's वो, again, see, that's what या I'm trying to tell you. Look at the pattern across his female characters. I don't know यस, if you've एंड थोड़ी seen, सख्त तबीयत होती हैं, यस। अच्छी खासी बदतमीज औरतें होती हैं। तो दिल का क्या हुआ, याद है आपको? क्या औरतें थी वो भाई? Yeah, वो कौन but औरतें this थी? is what there is a difference between empowered and narcissist. बट वो Right? And एम्पावर्ड औरत नहीं बनाते, वो एम्पावर्ड डायलॉग्स डालते हैं, बट वो एम्पावर्ड औरत right, नहीं but होती है, no, बदतमीज no, औरत that's a होती है। narcissist. या An empowered बदतमीज औरत woman होती है। is not afraid to be a woman, हम्म। right? An empowered एंड एन woman is not एम्पावर्ड afraid वुमन, of. व्हाट ही लाइक, इन पंजाब नहीं जाऊंगी, जो मेरा मेन ग्राउंड था, तुम Hmm. अपनी भैंसे मेरे नाम कर दो, तो मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूंगी। है? वो तो मुझे, वो जो तुम अपना अपार्टमेंट मुझे दे दो, वो तो मुझे भैंसे देने पे तैयार है भाई। क्या बात है ये, कौन औरत होती Okay, है ये? that I will say from my point of view what Khalil Saad saw that जो फवाद होता है, I think खगा, हुमायूं का नाम फवाद होता फवाद है खगा, ना? हाँ। Right. हम्म। So I don't know why I thought that name was deliberate, but there you go. थोड़ा सा it was a bit of a dig, but what I nagging was works, by saying, the way, guys, nagging works. yeah. Fawad Khaga was like it was like he I think Khalil Rahman Khamar justified जहाँ की उनकी अच्छी बात है कि what Fawad did was show that the other Kaka Asfar Rahman हम्म। was he values you for what he can get, whereas हम्म। I am valuing you for just being a woman. I just want That's you, मैं सब fine. कुछ तुम्हारे नाम, I get and that. believe it or not, at a certain age, women do get impressed by this. Right? हम्म। Later on, maybe not, but when you're young in your 20s, so yeah, okay. तो इंसान कहता है अच्छा, this man is willing to give up everything, and then later on she finds out हम्म। that was a game too, right? Game में था वो भी. So it was, I think that was pretty well written. No, Okay, I thought yeah, that he was yeah. he all throughout his characters, and I now have a bias, and I think he's only going to, it's going to take a lot for him to prove me wrong. Not that he cares, but मुझे लगता है कि उनकी सारी खवातीन जो होती हैं, वो जब भी खातून लिखती वो हैं, तो वो सख्त एक तबीयत एक होती बुत है. की पूजा करने वाली खातून लिखते हैं, वो कि वो एक गॉडेस है, जिसके ऑल्टर पे, जिसके पैर पे एक मर्द को फना होना होता है। वो ऐसी 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 खातून लिखते हैं वो। I think he's experienced that. In He's this. experienced that. If you look at Sadke Tumhare, I won't go into any more details. We go back to Sunn Mere Dil. But हम्म। we write what we know. We हम्म। write, and some writers write what they see. वो भी हम्म। एक group और है. द And एक्सपीरियंस, हाँ। yeah, and some people, particularly वो जो बहुत emotional stories होती हैं, I हम्म। think you write what you know. हम्म। So maybe that's it. So moving on to Sun Mera Dil, because कमिंग बैक, I हाँ। don't, ऑडियंस जो है मैं कत्ल कर दे और कहे कि भाई बस बड़ी होगी हाँ, फिर हमारे शुरू साथ. हो गए खलील साहब के Yeah. ऊपर, उनके फैन क्लब भी आ जाते हैं कभी कभी, हाँ। So I will say it's definitely a good watch. I think Wahaj Ali has a lot of star power, and the So way गुड he लुकिंग। looked, the सलमान way he looked खान, at Maya. या का Oof. नया जन्म, ओ माय गॉड यार, क्या आंखें हैं उस बंदे की, क्या वो Yeah. लगता है। और वो उसकी जो एक फ्रेम है ना, और मुझे लगता है हसीब के अंदर हर डायरेक्टर का एक म्यूज होता है। हर कुछ डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो कहीं से भी ब्यूटी ढूंढ लेते हैं। हसीब इज वन ऑफ दो डायरेक्टर्स जो कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं से उसकी ब्यूटी ढूंढ लेते हैं। लेकिन जो उन्होंने वहाज के एंगल चूज किए हैं ना भाई, कमाल है। इतने अच्छे तो तेरे बिन में भी नहीं थे एंगल वहाज के। Hmm. आई कैन, मैं तो ये बिल्कुल उससे कह रही हूँ। अब जो बिछड़ गए में बेचारे के, वो ही हैड टू Right. प्ले अ रेबल, तो उसमें क्या उसका एंगल, ही लुक लाइक अ रेविश्ड होमलेस मैन। बट इसमें माय गॉड, इतना वो हैंडसम लग रहा है। आई डोंट थिंक he's ever looked this handsome, hands down। Very polished. He's taken his role seriously. He looks like an international businessman. हाँ। And the way, I mean, that scene, it's so beautifully put together. वो हम्म। पहले उसकी तरफ inadvertently देखता है, वो छुप जाती है और थोड़ी सी फिर वो, पीछे उसकी आके. नजर उस पर ठहर फिर जाती है। ये नहीं, and then he looks down and then रहा नहीं जाता. Right? हाँ। And then looks again. I mean, हम्म। that was like, I mean, maybe nobody else got this, but for हम्म। me, it was like, तो oh my God. आई डोंट नो, वो दोबारा नजर उस पर उठा के देखते नहीं जो नहीं मुझे उतनी याद है। उसकी नजर, but नहीं, ये what तो you मुझे don't याद है कि see is, देयर आईज लॉक yeah, दैट मोमेंट, yeah. ओ गॉड, इट्स सो गुड। एंड आई थिंक कि No, no, वो, he looks down
और फिर मैं हम्म। थोड़ी लाइक काइंड ऑफ के एम्बैरेस, मैंने तो वादा किया हुआ था कि मैं नहीं देखूंगा, एंड देन हम्म। फिर से ही कांट हेल्प हिम से भी लुक्स अप दिल में अगेन, आई होगी सडनली ही आवाज, इज मूव्ड अवे। अब्बा तो या चले गए, अब तो किससे वादा, काय का वादा आ गया भाई सामने हाँ, में तो। लेकिन ये कि आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एपिसोड्स वेयर दे एक्चुअली मीट एंड देयर इमोशनल काइंड ऑफ जर्नी बिगिंस एंड व्हाट हैपेंस, एंड वो उसमें तो मैं बहुत इन्वेस्टेड हूँ भैया। एंड मुझे मुझे वहाज और माया की केमिस्ट्री भी बड़ी सरप्राइजिंगली स्पार्कलिंग लगी, क्योंकि होता है ना यार, वो आप हम्म, वो टीजर, वो पिक्चर्स, और वी नो दैट दे आर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो, आप नहीं एक्सपेक्ट करते कि इनकी केमिस्ट्री इतनी क्रैकलिंग होगी, इतना अच्छा लगेगा उनका वो मोमेंट। और भाई इट, एंड देन इट कन्विंसेस मी ऑफ दैट थ्योरी व्हिच आई ऑलवेज हैव अबाउट गुड एक्टर्स, व्हिच आई आल्सो हैड अबाउट युमना एंड वहाज फ्रॉम तेरे बिन, is that if two actors are good, I mean, they will somehow manage to create a certain level of chemistry, and yeah, but it's also to do with the director. Come on, ये I भी mean, है। like हसीब ने जो लाइटिंग रखी है, हाँ। इट इज लाइक, मैं उनसे ऐसे बात कर रही हूँ जिससे हम बात रोज करते हैं ना, हसीब ने ये कि हसीब, हसीब हसन सर did a great job with the lighting. हम्म। And there is a way of, I think Nadeem Beg also does it, Haisam Hussain does it. They हम्म। know how to create that intimacy That with beauty। the lighting. Yeah. Sometimes हम्म। I feel Haseeb, Hassan and Haisam have worked with the similar pairs. है ना, काफी पॉसिबल। एक्टर्स मिलते जुलते हैं। हम्म। तो in what was that, जो बिछड़ गए, it's Maya and Wahaj थे, वहाज, हाँ। so insane chemistry थी in जो बिछड़ गए, remember, absolutely insane. हम्म। And so I think well done to Haseeb Hassan for, because I think if anybody else had been there, I don't think I'd be watching this show. So I पॉसिबल। think well done to him for that. Na? But what last word on this is, we didn't need all this. हम्म। बड़े आसानी से उसकी नौकरी कहीं लग जाती वहां, हाँ। इतने लंबे नहीं, और वो चले डायलॉग थोड़ा एंड ऑल बहुत दैट, अगर वी आ डिडंट भी नीड जाता ऑल ना ऑफ इट। फड्डा, उसकी नौकरी में फड्डे आ भी जाते, तो वो एक आध एपिसोड में रिजॉल्व हो सकते थे। अभी तक चल रहा है वो मसला। वो पहली एपिसोड से उन्होंने उसको देखा हुआ, 6 एपिसोड हो गई हैं, 5 हो गई हैं, कितनी हो गई हैं, वो अभी तक मसला चल रहा है। वो उनमें अब्बा भी अच्छा, मर गए बेचारे। there is a detective series that my husband sometimes reads in Urdu, हम्म। and वो कहते हैं हीरोइन को लास्ट टाइम उसने देखा तो वो जा रही होती है, हम्म। विलन्स उसको उठा के लेके जा रही होती है, एंड मैंने हम्म। कहा हीरो कहाँ होता है, बिकॉज वो आटे की बोरी में बंद होता है, तो वो एक मोरी से देखता है, राइट, हम्म। एंड आई फील खलील साहब रोमांसेस आर लाइक दिस कि हीरो बेचारा ना आटे की बोरी में एक मोरी करके तो दूर से देख रहा होता है हीरोइन को ना। कहाँ सो से लेकर आई हैं आप ये मिसाल सदफ? लेकिन दिस इज वो आटे की, वैसे दिस इज अ गुड रेफरेंस पॉइंट टू कीप, आटे की बोरी में से बेचारा हीरो देख रहा है, तो बेचारे वहाज को उन्होंने आटे की बोरी में बंद कर दिया, जैसे कि वो हमेशा अपने वो, जैसे वो मुन्ना भी बेचारा छुप छुप के देखता रहता था जरनाब को। मगर वही बात है कि अगर आप खलील साहब किसी को अपनी स्क्रिप्ट थोड़ी सी एडिट करने दें, आपका अपना ही फायदा है, आप और सारी जिंदगी सुपर हिट रहेंगे, हम सबकी जबानों पे छाए रहेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि वो नहीं करने देते, और वो दिखता है। क्योंकि देखिए वही बात है, जब कोई राइटर कोई चीज लिख रहा होता है वो अपनी दुनिया में होता है। एक एडिटर, चाहे वो किताब हो, चाहे वो सीरीज हो, चाहे वो फिल्म हो, एक एडिटर क्यों इतना क्रिटिकल होता है? एडिटिंग के अवार्ड होते हैं भाई। तो ये वजह होती है यही कि अगर आप एक एडिटर को उसका काम करने दो, डायरेक्टर को अपना काम करने दो, तो वो शायद आपकी जो नोक पलक जो संवारनी है वो, उसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई गलत और बात नहीं है। जमाना, आई एम अफ्रेड कि, आई डू अपोलोजाइज, आप बात फिनिश करें फिर मैं नहीं, मेरी कब। हो गई खत्म, बताइए बताइए। अच्छा, वो है, आई थिंक जमाना बदल गया। प्यारे हम्म। अफसर में जो था कि भाई इतनी हम 500 एपिसोड्स गुजर गई, तो जी वो जो रोमांस अभी शुरू नहीं हुई, वो हाँ। लड़का लड़की एक दूसरे से, इस जमाने में तो बिल्कुल नहीं चलेगा। राइट, क्या हम्म। अगर वो दूर से देखते ही रही और नाचते रहे दूर से एक दूसरे को देख हाँ। के ना, हाँ। कि हाँ। अच्छा तो ये हवाओं में चल रहे हैं बाल, सोचों में है तो पता नहीं, तो शायद ये नहीं चलेगा। हाँ। राइट, you have us for a little while, हम्म। make good use of us. So, ऑल्सो वी आर लॉयलिस्ट open ना our सदफ, eyes. मैं Hmm. और आप तो लॉयलिस्ट में से एक हैं। Hmm. वहाज की इतनी इंसेन फैन फॉलोइंग है डेवलप हुई हुई। लेट्स से दिस वाज अ नॉट अ एक्टर हु विद दैट काइंड ऑफ फॉलोइंग, या इवन माया इज अ ह्यूज ह्यूज स्टार। सो अगर आपके पास लेट्स से रिलेटिवली नॉन गुड एक्टर्स, नॉन बिग एक्टर्स होते, इस तरह की स्क्रिप्ट आप उठाते, और इस तरह की स्क्रिप्ट को इस तरह के व्यूज आते नहीं, ये काम सा डब्बा ड्रामा होता,
और डब्बे ड्रामे के पीछे लोग गालियां दे रहे होते कि यार ये क्या बना दिया, इनकी वजह से हम पाकिस्तानी ड्रामे नहीं देखते। सॉरी टू से, लेकिन ये कि ये एक फैक्ट है। और खलील साहब बहुत लकी हैं कि उनको, और मतलब उनकी अब एक स्टेचर है, उस पर कोई डिनाई नहीं करता, उनके टैलेंट को कोई डिनाई नहीं करता। हम्म। लेकिन जब वो इस तरह के इतने केजी हो जाएंगे, अगर कि वो अपनी ये चीजों को ठीक नहीं करेंगे, जो कि मुझे पता है एक न्यू कमर राइटर, अच्छा ही राइटर इस तरह बनता है जब एक कंटेंट वाला उनके साथ बैठता है, चैनल का बंदा उनके साथ बैठता है, फिर उनको कहता है नहीं भाई ये यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता, उससे चीज कभी बहुत अच्छी बन जाती है। और फिर मुझे लगता है कि जैसे एक्टर्स को भी अलाउ करना चाहिए कभी कभी कि थोड़ा सा उसके साथ खेल सकें, किरदार के साथ, क्योंकि कभी कभी एक्टर्स भी बहुत अंडरस्टैंड कर लेते हैं आइडिया को। लेकिन मुझे लगता है वो भी नहीं अलाउ करते होंगे, शायद हुमायूं को करते हों वैसे शायद, और बहुत मुमकिनात में से है कि कुछ हुमायूं को भी नहीं अलाउ करते होंगे। तो that's it for the discussion, guys. Sun Mere Dil. Sadaf, any other thing you'd like to add about Sun Mere Dil, or any other drama that you'd want to? No, I really want to watch सुन मेरे दिल, but Hmm. I hope they don't lose me, क्योंकि अगर लंबा खींच दिया तो प्यारी शक्लें कब तक देखेंगे, right? And I think it's a shame for the audience as well, Hmm. and for the actors कि उन्होंने इतनी effort लगाई है, हाँ. right? Hmm. They have made huge efforts with the wardrobe. I think सुन मेरे दिल probably may catch on after कभी मैं कभी तुम Wives Up, ये भी because है. you know, yeah, That is, I that have a drama is feel, eating everyone up right now. yeah, yeah. Like, have you So seen the once that is TRPs? It's over, like तो फिर you'll see the 19. TRPs climb. Yeah. Yeah, like कभी मैं कभी तुम is like at 19 and everybody नहीं, else is उससे भी like ज्यादा 20s में 20। गया, आई थिंक। हाँ गया या था, गया था, लेकिन अच्छा, अभी स्टेडिली 17 18 19 पे खेल रहा है, और बाकी सब फिर 10 राइट। से शुरू होते हैं। सो इट इज माइल्स अहेड आउट ऑफ एवरीवन, एंड लेट्स सी व्हेन कभी मैं कभी तुम एंड्स। गाइस आप लोग बताइएगा, आप लोगों को सुन मेरे दिल और दुनियापुर कैसा लगा? मेरा लास्ट वर्ड सुन मेरे दिल पे बिल्कुल वैसा ही है, हम्म। सदाफ वाला। लेकिन थोड़ा सा मैं एडिशन ये भी करूंगी कि अब बहुत अच्छे जब एक्टर्स होते हैं ना, तो उन पे कैपिटलाइज करना चाहिए। आप कास्टिंग करते वक्त राइटर्स, खलील साहब जैसे राइटर्स तो अपने दिमाग में पूरा रखते हैं कि उनको कौन सा किरदार चाहिए, और वो लड़ाई भी करते हैं कि नहीं ये बंदा मेरा स्क्रिप्ट नहीं करेगा, ये बंदा मेरा स्क्रिप्ट करेगा। इस पे इनकी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं, और कुछ लोग जिनसे उनकी लड़ाइयाँ हुई हैं वो स्क्रिप्ट में मौजूद हैं। तो जो है वो ये जो खलील साहब करते हैं कि उनके दिमाग में कुछ एक्टर्स होते हैं, तो राइटर भी खलील साहब आपके लिए भी मैसेज है, चैनल वालों के लिए भी मैसेज है। जब आप इतना बड़ा एक्टर ले रहे हैं, वहाज हैं, माया हैं, तो फिर उनको उनका स्पेस दें। जो मुझे जद पत्तों का बन से भी शिकायत है, मुझे कुछ और ड्रामों से भी शिकायत है, या तो आपने बनाना ही डब्बा ड्रामा है, बकौल सदफ के डब्बा ड्रामा जो आप बनाते हैं, किचन ड्रामा जिसे, और इंडस्ट्री में जार्गन किचन ड्रामा होता है, जिसमें आपने वो 6 8 एक्टर जो भी उनके जो डेली का काम होता है वो कर लेते हैं और वो वो चला रहे होते कैमरा हैं। मैन लगा देते हैं तो वो बेचारे हाँ एक्टर बेचा घूम लाइन रहे लाइनें होते बोल हैं के वो बस। दिन के 36 सीन शूट करके वो चले जाते हैं। लेकिन जब आप इतना कोई एक चलो, सीन, उसकी अपनी जगह है, उसकी अपनी राइट। जगह है, और वो मैंने बड़े इंजॉय भी किए हैं कुछ ड्रामे वो वाले, मुझे तो राइट। बड़े अच्छे भी लगते हैं, बड़ा मजा, बहुत अच्छे ड्रामे भी हैं वो वाले। लेकिन कुछ ड्रामे जो आपके इतने सिग्नेचर प्रोजेक्ट्स हैं, आप उन पे हाइप क्रिएट कर रहे हैं, उनकी पीआर पे इतना पैसा लग रहा है, और जैसे सदाफ ने कहा वो वार्डरोब पे बेचारी हीरोइन खर्च हो गई है पूरी, तो उसके लिए फिर आप जो आपने इतना खर्चा किया है, तो आपको जब पता है कि यार रियल स्पार्क या केमिस्ट्री इधर है, तो इनिशियली ऑडियंसेस को, ये हम आप ही के भले के लिए कह रहे हैं कि हम हमें कोई पैसे नहीं मिल रहे इस चीज के, आप ही के लिए कह रहे हैं कि इस पे प्लीज फोकस करें, कि आपने इस पे कैपिटलाइज करना है, इन पे चलाना है ड्रामा, और ऑडियंस वो इन्हीं सी को देख। सिर्फ वो जर्द पत्तों में बन में होता था कि भाई नौफिल और मीनू। सचिन के सीन्स जो हैं वो दो हैं, तो हाँ, बाकी पूरे वो भरा हुआ। पूरा गांव भरा हुआ होता है ड्रामे में, वो जो बेचारे असली जिनकी वजह से, और जो सबसे अच्छे उनके सीन्स होते हैं, इतनी अच्छी केमिस्ट्री है दोनों की, और सजल खुद कितनी बाकमाल किरदार है, उस मतलब एक्टर है, उसके सीन होंगे 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, और फिर बाकी पूरा आप 57 वो 37 मिनट आप कुछ और देख रहे हैं, तो इट्स नॉट गोइंग टू, इट्स नॉट, दैट्स व्हाई यू विल लूज द दैट ऑडियंस। विल नॉट वर्क विद अस। That will not work, you will lose the audience. And again, like again, just saying, wrapping it up, okay, make it more modern. Your love stories have to be modern, and a guy drinking does not make it modern. Drinking has been there for a while. दुनिया के पता नहीं Oh कब से man, we ड्रिंकिंग चल used to रही है। watch these things in PTV के पता नहीं वो हमारे बहुत फेमस थे। I won't go into anecdotes, but drinking is nothing new. वो तो मुगलों के जमाने से उससे भी those पहले love से भाई दुनिया stories। में कब से इजाद हुई है शराब, और उसको वो ये कहानियां तो कब से Last चल word, रही हैं। last word, Osama Khan, I'm not ignoring you. He is brilliant actor. गैर हम्म। में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बल्कि better than the rest of the cast. हम्म। And in हम्म। सुन मेरे दिल, the guy is good. And I रियली think he आई would. डोंट एग्री। आई हैव सम फीडबैक फॉर उसामा खान। आई थिंक Okay. उसामा को अपनी आवाज थोड़ी सी हैवी करके उसमें थोड़ा सा ठहराव लाना चाहिए। वो जुमला हमेशा एक ही You तरह, mean dialogue delivery? डायलॉग Yeah. डिलीवरी, और वो जुमला हमेशा एक ही तरह बोलते हैं, तुम कहाँ जा रही हो,
वो कहीं अच्छा लहरा पता नहीं, देते हैं। मुझे प्यारा लगता है, नहीं, बट आई प्यारा तो विल वो है, ही इज वेरी नहीं नहीं क्यूट। वो ये नहीं, पहले इतना भी नहीं था, अब थोड़ा सा ही इज लुकिंग, नहीं बट नहीं, आई थिंक आई ही थिंक वाज ऑलवेज क्यूट। I'm going to check out his dialogue delivery in both now that you've said it, okay? हम्म But I thought he did very well. वो dialogue बोलने का तरीका in गैर is हम्म। much better than in this one. I'll Like, also recommend, if I'm sure you must have already seen it, जो सिया सीरीज थी ग्रीन टीवी की, जिसमें हॉरर जो था, उसमें yeah, I've उसामा seen. खान का एक रोल था, एक छोटा सा, उन्होंने भी एक पीस प्ले किया था उसमें। there's a story is about a wife who gets possessed and then they're in this honeymoon lodge type of a thing. It's a The one real. with Usman Khalid Butt, right? The one where his wife is possessed and वो क्योंकि they want his wife to act according to his needs, वो No, एक no, no, जिन no. देखते हैं. No, 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 no. Yeah. This is another one. This is just him and a bunch of other not really known actors. But वो एक छोटा सा उनका it's a two part horror show जो उन्होंने किया था। That seems like the same one. Okay. No, no, it's not, because it's like a group of ghouls who are basically haunting the man, Okay. and Okay. they've basically trapped the whole lodge into getting fresh meat from honeymooning couples. उनकी बीवियों को वो अच्छा 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 मेन अच्छा चुड़ैल अच्छा. होती है, एक हेड चुड़ैल होती है जो उनको अपने साथ लगा लगा के बेचारे बंदे पागल बना रही होती है वो। और वो उनको ओके. वो उसका उनका एक पूरा एक वो क्या बन जाता है, वो जो एक उनका एक ग्रुप बन जाता है, जिसके बाद दे आर अ ग्रुप ऑफ चुड़ैल्स हॉन्टिंग एवरीवन। एंड वो उसमें उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी। और हॉरर में एक्टिंग उस तरह करना, व्हेन यू आर नॉट द मेन भूत, is हम्म. a huge thing, because you are basically reacting to a lot of situations and you're acting on behalf of the audience. So he was the audience's eye, and वो बहुत अच्छा काम किया था उन्होंने उसके अंदर। और मुझे उसके बाद लगा था, मैंने कहा नहीं, ये एक्टर अच्छा है, इससे कोई काम सही नहीं ले रहा। तो और कभी कभी हम्म. ना कुछ एक्टर्स को उस डायरेक्टर तक पहुंचने में बहुत टाइम लगता है, जो उनको बताए कि नहीं, तेरा जो ये टोन है, या तेरा जो ये पोज है, या तेरा जो ये अंदर से निकला है ना जो स्टाइल, वो बेस्ट है, प्ले ऑन दैट। सो ही नीड्स टू वर्क विद द डायरेक्टर हुएवर ही फाइंड्स दैट केमिस्ट्री विद। और कोई भी डायरेक्टर हो सकता है, ये नहीं मैं कहूंगी कि भाई आप काशिफ निसार के साथ ही काम करोगे तो ऐसा, वो कोई भी डायरेक्टर हो सकता है, वो कोई डब्बा डायरेक्टर भी हो सकता है, कोई सोप But what डायरेक्टर भी हो fantastic सकता है। directors. So yeah. या सो And एनीवे even गाइस। हम लोग कहते हैं डब्बा, but हम्म। that's I say डब्बे this की a अपनी lot. जगह होती है, डब्बे की किचन Yeah. में बहुत जगह होती है, डब्बा डब्बे के बगैर जिंदगी नहीं गुजर सकती, और ये याद डब्बा रखें। काम करते हैं, but it takes time to get there, right? कोई हाँ, इट पैदा टेक्स नहीं टाइम। होता. और बहुत हम्म. सारे डब्बे बनते हैं तो फिर एक मास्टरपीस बनता है। तो हम डब्बों के लिए भी खुश हैं, हम डब्बे देखते हैं, हम खुद भी कभी कभी डब्बे वाली बातें भी करते हैं तो डब्बा जिंदाबाद, कोई मसला नहीं, बट मास्टरपीसेस भी जिंदाबाद। खलील साहब, प्लीज अलाउ पीपल टू एडिट योर स्क्रिप्ट। दुनियापुर गाइज, प्लीज, more close shots, more master shots of the grandeur and close shots of the reaction. It's very simple. Hope that happens. Khushal, amazing. Maya and Wahaj, amazing. Thank you guys for watching. Yes, big heart. And thank you, Sadaf, for your time. Anything else you'd like to say to the commenters? We're about Nothing to. else. We'll look forward to seeing you next week. Yes, we look forward to seeing you next week. If there are any other dramas that you want us to watch, let us know in the comments. Take care of yourself. Khudafiz.